Hello, good morning students. How are you? I think all of you are very good. In this video, we are going to discuss about the process of nutrition, how many organisms can be classified on the behalf of nutrition, and a short or brief discussion about the process of photosynthesis. I think this video will definitely help you to understand this topic. Before starting this, I have a few questions in my mind. That is, I think also these type of questions also in your mind. Like when we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Bicycle हम चलाते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस टाइप की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी में वो कैसे पूरी होती है. Another one is even when we are not doing any activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. हम कोई वर्क भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपने आप को मेंटेन करने के लिए. तो इस टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी में है वो कैसे पूरी हो जाती है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं. Another one is we also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in our body. So we can say the only source of energy and material which provide us energy, that is food material. So question is ki how this food material enter inside our body. Then the answer is by the process of न्यूट्रिशन. ये जो फूड मटेरियल है वो हमारी बॉडी में किस प्रोसेस के थ्रू अंदर जाता है, दैट इज न्यूट्रिशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. वी कैन से न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट मटेरियल टू प्रोड्यूस एनर्जी. न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है और फूड मटेरियल को गेन करता है. नाउ व्हाट आर द मटेरियल विच वी गेट. द मटेरियल विच वी गेट and that provide us energy is known as nutrient. What are nutrients? Nutrients are those materials which provide us energy known as nutrients. So nutrition is the process by which we get material to produce energy to fulfill our requirement, body requirement. After that there are two types of nutrition. Autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. What are autotrophic and heterotrophic mode of nutrition? Those organisms which make their own food by self known as autotrophic organism, and the mode of nutrition known as autotrophic mode of nutrition. Examples are all green plants. And heterotrophic mode of nutrition, hetero means to others and trop means nutrition. Those organisms which depend on others to get their nutrition known as heterotrophic mode of nutrition, and those organisms known as heterotrophs or heterotrophic organism. Now we are going to discuss about the autotrophic mode of nutrition, and examples are all green plants. Green plants are known as autotrophs because they can able to make their own food by self and by the process of photosynthesis. What are the process of photosynthesis? Photosynthesis is a process by which plant make their own food by self. They are using carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll and make their food by self, and also release oxygen into the atmosphere. This is the reaction of this process, photosynthesis process. With the help of this reaction, we can also make the definition of photosynthesis. How can? See, plant take carbon dioxide from the atmosphere. And water from the soil in the presence of sunlight and chlorophyll, and convert all these things into glucose to make their food, and also release oxygen into the atmosphere. So we can say plant take carbon dioxide from the atmosphere and soil
and water from the soil in the presence of sunlight and chlorophyll, and convert all these things to make their food, and also release oxygen into the atmosphere. This is the process of photosynthesis. Now where this process occurs? So this process occurs in green parts of plants like leaves, mostly occur in leaves. Leaves have a tiny pore-like structure that are called stomata. This is the structure of stomata. Stomata take part in the gaseous exchange. You know, carbon dioxide converted, carbon dioxide enter inside and oxygen is released. This is the gaseous exchange. Gaseous exchange occur in stomata. This is the diagram of stomata. Stomata. This is the stomatal pore, and there is a chloroplast. In chloroplast, the chlorophyll is present. What are the function of chlorophyll? Chlorophyll is helping to receive the sunlight. Chlorophyll is the receiver of sunlight. All the sunlight which is used in this process are received by chlorophyll. आपने देखा होगा जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब पौधे सूख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन है वो घटने लगता है, क्योंकि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक का ही सनलाइट रिसीव कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा सनलाइट अगर इनके ऊपर हाई इंटेंसिटी का सनलाइट इनके ऊपर आएगा तो ये रिसीव नहीं कर पाएंगे, और क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो सनलाइट को रिसीव नहीं कर पाते हैं प्लांट, इसीलिए प्लांट सूखने लगते हैं ज़्यादा गर्मियों में. नाउ मूव ऑन टू द अनदर वन. इवेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इस पूरी की पूरी होल फिनोमिना में, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट जो हैं वो आते हैं. तो फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. तो क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. जो लाइट सनलाइट है उसका एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? क्लोरोफिल. नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. जो लाइट एनर्जी सनलाइट के थ्रू आने वाली एनर्जी क्लोरोफिल के थ्रू रिसीव हुई है उसको किसमें चेंज कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी में. आफ्टर दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसके बाद जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है और उससे क्या बनता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. एंड नेक्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन किसमें हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये कितने इवेंट आते हैं? फर्स्ट इवेंट लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है. सेकेंड इवेंट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. अनदर वन इज वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ऑक्सीजन बनाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाता है. फाइनली फूड मटेरियल बन के तैयार हो जाता है पौधे का. नेक्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्टिंग दिस प्रोसेस. कुछ फैक्टर होते हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि लाइट की जो ये रिएक्शन है इसके रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज लाइट. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर कंटेंट. दैट्स इट in this topic. I hope you will well understand of this topic. Thank you and have a nice day.